So we have question number 26. A production function at time t is given by yt is equals to at kt alpha l t1 minus alpha, where alpha belongs to 0 comma 1 and alpha is not equals to 0.5. Additional information not required. Where y is your output, k is your capital, L is your labor, and A is the level of total factor productivity. Define per capita output as yt is equals to yt divided by lt. We all know that. ये हमने काफी बार क्लास में करा भी है. एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो इज इक्वल्स टू केटी इज इक्वल्स टू केटी डिवाइडेड बाय वाईटी. अब ये जो कैपिटल आउटपुट रेशियो हमने कभी भी सोलो मॉडल में यूज किया नहीं है. ये वैसे भी नो दैट कैपिटल आउटपुट रेशियो इज केटी बाय वाईटी, बट हम इसको देखते हैं कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं और इक्वेशन को रीफ्रेज कैसे कर सकते हैं. फॉर एनी वेरिएबल डिनोट dxt dt is equals to x dot, which is nothing but the change in any particular variable. uh, so we are changing with respect to time. For example, अभी अगर मैं बोलूँ, if I compare 2020 with 2021, तो during this 1 year एक पर्टिकुलर वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है, दिस इज नथिंग बट डी एक्स टी बाई डी टी. तो इसको हम सोलो मॉडल में आप मास्टर्स में पढ़ोगे या फिर आपने भी शायद ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा. हम एक्स डॉट लिख देते हैं, वेर एक्स इज दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, राइट. द पर कैपिटा ग्रोथ रेट, द पर कैपिटा आउटपुट ग्रोथ रेट इज व्हाट. सो इन दिस केस वी नीड टू फाइंड द पर कैपिटा आउटपुट ग्रोथ रेट. बट यहाँ पे क्योंकि इन लोगों ने हमें ये वाली इंफॉर्मेशन दे दी है, so we need to use this information as compared to normal KT. So now the question is how we can solve this. Guys, again I'm repeating this. If you are not able to follow anything, please do ask, unmute and ask your doubt. Yeah. Okay. So let's solve this. We have YT is equals to AT KT alpha L T1 minus alpha. तो अगर कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा जहां पे ऐसी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे करना है. क्योंकि हमें पर कैपिटा इनकम चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें वाई टी डिवाइडेड बाई एल टी तो करना ही पड़ेगा. बट अगर मैं स्ट्रेट अवे ये वाला एल टी ले जाता हूँ विद द पावर, तो क्या ये इक्वेशन क्या बन जाती है? वाई टी डिवाइडेड बाय एल टी 1 - अल्फा विच इज इक्वल्स टू ए टी के टी अल्फा. ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग केटी से डिवाइड नहीं कर रहे हैं अभी एल को, बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. अभी मैंने सिर्फ एल टी 1 - अल्फा को इधर लेके गया हूँ, राइट. अब नाउ द क्वेश्चन इज, क्या मैं इसको y बाय एल की तरह सॉल्व कर सकता हूँ? द आंसर इज नो. जब तक वाई टी की पावर 1 - अल्फा नहीं हो जाती, तब तक मैं इसको डिवाइड नहीं कर पाऊंगा प्रॉपरली. तो in order to make this yt as yt raised to the power 1 - अल्फा, what I need to do? Obviously, if we have yt and if I divide this yt by yt alpha, and if I solve this now, what I'll get? Obviously, yt 1 - अल्फा. Can we see that? So basically, now the next step is to divide yt alpha on right as well as left hand side of the equation. So this will be yt alpha. So sorry, just give me a second. Into LT 1 - अल्फा, which is equals to AT alpha divide this by YT alpha. तो हमने अपनी इक्वेशन को अभी तक नहीं छेड़ा है, हमारी इक्वेशन एज इट इज वैसी ही है, बट हमने इसको रीफ्रेज कर दिया है अपनी इक्वेशन को. नाउ कैन आई राइट दिस थिंग एज YT 1 - अल्फा divided by LT 1 - अल्फा, which is equals to AT into, and can I write this as KT alpha, where this KT is nothing but KT by YT, that is capital output ratio, right? So in this case, obviously we can write this, right? We can write this equation.
नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या हम इसको पर कैपिटा टर्म्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं? द आंसर इज यस. लेट्स डू दैट. दिस विल बी y e 1 minus alpha is equals to at, and then we have kt alpha. टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, अगर आपको लॉग लेना है तो, क्योंकि हम ग्रोथ रेट की बात करें तो लॉग से वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है. So this is 1 minus alpha log yt, which is equals to log at plus alpha log kt. राइट, मैंने सिर्फ लॉग लिया है. अब लॉग का डिफरेंशिएशन कैसे होता है मैं आपको एक बार वो समझा देता हूँ. लेट्स से वी हैव वन वेरिएबल log x and I want to differentiate with respect to time. Remember that I am differentiating with respect to time, right? So log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 by x. But x का डिफरेंशिएशन with respect to time क्या होगा? x dot, that is dx by dt. So अगर मुझे with respect to time differentiate करना है तो it will be x dot by x. Given that now you have the knowledge of this particular information, just removing this for the time being. We can write this as 1 minus alpha y dot by y, मैंने differentiate करा with respect to time, is equals to a dot by a plus alpha a dot by a. And we can take this 1 minus alpha to right side. It will be y dot by y is equals to a dot by a 1 upon 1 minus alpha plus alpha 1 minus alpha a dot by k, right? And in this case, this is your final answer. Any doubts, anyone? So I think option number A is the correct answer. Yep. Cool. Let's move forward to the next question. Next question says that an industry has three firms, one to three, in a cornered competition. They have no fixed cost and their constant marginal cost are respectively C1, C2, C3 आपको given है. But remember that ये marginal cost है. जब हम इसको profit function में लिखेंगे तो हमें into Q करना पड़ेगा. They face they face an industry inverse demand function which is equals to 1 P is equals to 1 minus capital Q. अगर मैं इसको कॉर्नर के हिसाब से लिखूंगा then what can I write here? P is equals to 1 minus Q1 minus Q2 minus Q3, right? Where P is the market price and Q is the industry output, sum of the three outputs. Suppose that QC is the industry output. अब ये जो QC है, this is the addition of Q1, Q2, Q3 under coordinate equilibrium, but we need to find QC to the power minus 1. Can we say that QC to the power minus 1 is nothing but 1 upon QC, which is equals to 1 upon Q1 plus Q2 plus Q3. So basically we need to find this. So let's start. Right. So guys, in this case we have P minus or P is equals to 1 minus Q1 minus Q2 minus Q3. This is the demand and different costs are C1 is equals to 11 by 30, C2 is equals to 10 by 30, C3 is equals to, sorry, I guess there is one problem. Just give me a second, Vijay. I guess this is not 11 by 30, this is 9 by 30. So please make the correction. This should be 9 by 30, not 11 by 30. एक बार आप प्लीज पास्ट टेस्ट में चेक कर लेना. अकॉर्डिंग टू मी दिस इज 9 by 30. सो इसको आप प्लीज 9 by 30 लिखोगे बच्चे. राइट. एंड C3 इज 11 by 30. राइट.
Now, we need to write down the profit function of firm 1 because we need the best response function, which is equals to 1 minus Q1 minus Q2 minus Q3 whole into, because this is only price, Q1 minus cost, which is 9 by 30 Q1. अब अगर आप इसका डी पाई वन बाई डी क्यू वन करते हो, then what you will get 1 minus 2Q1 minus Q2 minus Q3 is equals to 9 by 30, राइट। और इसको आप एक काम करो, इसको आप ना ऐसे लिखो अभी के लिए, माइनस के टर्म्स में लिखो, माइनस 9 by 30 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो टर्म्स है इसको आप टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ले जाओ, so this is 1 minus 9 by 30 is equals to 2Q1 plus Q2 plus Q3, right? So we can rewrite this as 2Q1 plus Q2 plus Q3 is equals to 21/30, right? सिमिलरली जब हम प्रॉफिट फंक्शन टू के लिए निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, Q1 प्लस 2Q2 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू व्हाट। अब 10/30, 1 minus 10/30 is 20/30, एंड अगर मुझे लिखना है प्रॉफिट फंक्शन 3 के लिए, तो दिस इज Q1 Q2 प्लस 2Q3 is equals to 1 minus 7/30 is 19/30. Now, all you need to do is, अब हमें Q1 Q2 Q3 के अलग अलग वैल्यू नहीं निकालनी, हमें एक साथ वैल्यू सबकी निकालनी, बिकॉज वी नीड 1 by Q1 plus Q2 plus Q3। आप इन सबको ऐड कर दो, इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर दो। व्हेन यू ऐड फॉर Q1, so this is 2Q1 plus Q1 plus Q1 which is equals to 4Q1, plus similarly for Q2 this is 4Q2, for Q3 this is 4Q3 is equals to 21 plus 20 plus 19 which is 60/30. Take 4 as common, Q1 plus Q2 plus Q3 is equals to 2. Now we know that Q1 plus Q2 plus Q3 is equals to, यहां से हमारा बचा था 2, 2 divided by 4 is half, therefore QC is equals to half, therefore 1 by QC is equals to 2. So your correct answer should be equals to 2. Right? Guys, if you have any doubt, do let me know. Yep. Moving forward, we have question number 52. The simplest question. ये हम आई थिंक हमने क्लास में एक दो बार डिस्कस किया हुआ है। हमें यूटिलिटी फंक्शन गिवन है जिसके अंदर दोनों मैक्स और मिन है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस बनेंगी, और हमें पता है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस बनेगी वैसे ही हमारे डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शंस आते रहेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। So in this case, if x1 is more than x2, we have max से क्या बाहर आएगा बच्चे, ऑब्वियसली 0.5 x1, क्योंकि x1 मोर है, और min से क्या बाहर आएगा x2। सो ये बना केस 1 के लिए। केस 2 के लिए बनाते हैं, इफ x1 इज लेस देन x2, मैक्स से क्या बाहर आएगा 0.5 x2, min से क्या बाहर आएगा x1। केस 3 की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि इफ x1 इज इक्वल टू x2, तो मैक्स और मिन से आप सेम भी निकाल सकते हो, तो हार्डली मैटर्स। सो हमारा केस 1 केस 2 से आंसर बहुत इजीली निकल सकता है, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट शी हैज सम पॉजिटिव इनकम y, जस्ट गिव मी अ सेकंड, शी हैज सम पॉजिटिव इनकम y and faces positive P1 P2 for goods 1 and 2। suppose P2 is equals to 1, P1 by P2 हम लिखते हैं ना,
प्राइस रेशो, एंड P2 को उसने अगर 1 कह दिया तो प्राइस रेशो हमारी बची क्या, ऑब्वियसली P1। देयर एग्जिस्ट अ लोएस्ट प्राइस P1 बार, ये लोएस्ट है बच्चे, राइट। सिक्स दैट इफ P1 इज मोर देन P1 डैश, तो जो भी मैंने P1 सिलेक्ट करा, अगर ये ज्यादा होगा P1 डैश से, देन द यूनिक यूटिलिटी मैक्सिमम चॉइस इज टू ओनली बाय गुड टू। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो मैं सिर्फ गुड टू बाय करूंगा, राइट। आई विल बाय ओनली गुड टू। नाउ द क्वेश्चन इज, देन द लोएस्ट प्राइस विच इज P1 डैश इज व्हाट। कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, हमें पता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली वी नीड टू चूज ओनली वन, राइट। इसका एमआरएस निकालो फटाफट। एमआरएस मैं वन का मतलब इक्वेशन वन की बात करो, केस वन की बात करो, विच इज इक्वल्स टू ओनली 0.5 विच इज हाफ। एमआरएस ऑफ टू इज व्हाट, 1/0.5 विच इज इक्वल्स टू 2। अब मुझे पता है कि दोनों सिचुएशंस में मैं क्या बाय करूंगा, गुड टू तभी बाय करूंगा जब मेरा एमआरएस is lesser than price ratio, and in this case price ratio is P1 only, because P2 is equals to 1, right? So in this case ये वाली कंडीशन भी होल्ड होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी होल्ड होनी चाहिए, और यहाँ पे और नहीं, यहाँ पे एंड है, क्योंकि अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है तो हमारा एक से, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा जो P1 है वो इक्वल्स टू 1 है, तो ये वाली कंडीशन तो होल्ड हो रही है, तो यहां से तो मैं x2 ले रहा हूं, बट ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, which means MRS which is in this case equals to 2 is more than price ratio which is equals to 1, and hence I can buy good one. So this condition should hold, so that means ये दोनों कंडीशन should hold। अब यहाँ पे एक बात बताओ, अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, एक जगह लिखा हाफ, एक जगह लिखा टू, और मैं बोल रहा हूं कि प्राइस मेरा हाफ से बड़ा होना चाहिए एंड टू से भी बड़ा होना चाहिए, अब बताओ कॉमन एरिया क्या आएगा। सो द कॉमन एरिया विल बी, मेरा प्राइस टू से बड़ा होना चाहिए, एंड दिस इज द लोएस्ट प्राइस। अगर ये जो लोएस्ट प्राइस विच इज P1 डैश होगा, और अगर मेरा कोई भी प्राइस ये होगा, तो ऑब्वियसली आई विल कंज्यूम ओनली गुड टू, एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज फॉर P1 डैश my lowest price should be equals to 2। Let me know बच्चे if you have any doubts, yeah? Okay. Moving to next part. Uh, just give me a second. Okay. Now, in two-period model, consumer is maximizing the present discounting utility W2 which is equals to ln, ये utility function given है, ln ct plus 1 upon 1 minus theta ln ct plus 1। ये ct plus जो 1 है ये ऐसे गिवन नहीं है, ये ct plus 1 ऐसे गिवन है, ct plus 1। तो ये ऑल्सो टाइपिंग मिस्टेक है, जो हमने टाइप करवाया, बट जो एक्चुअल फाइल है IIT दिल्ली की, उसमें CT+1 ऐसे ही गिवन है। With respect to CT and CT+1 and subject to the following budget constraint, so this is your budget constraint, this is nothing but whatever we have discussed in class। Please remember that ये YT+1 यहाँ पे है, ऐसे CT+1 यहाँ पे है, right? Where CT and YT are the consumption and income in period I equals to T and T plus 1 respectively. Theta belongs to 0 to infinity. R is your interest rate. Suppose the consumer is in the interior equilibrium. अब वो interior equilibrium में कब होगा, जब MRS is equals to price ratio होगा, right? जब टेंजेंसी कंडीशन होगी, और यहाँ पे प्राइस रेशो क्या है, 1 + R, तो वी नीड टू क्विट MRS with that 1 + R, right? एंड थीटा की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ CT+1/CT, एंड दैट इज इक्वल्स व्हाट, द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इसके अंदर कुछ करना ही नहीं था आप लोगों ने। एमआरएस निकालो सबसे पहले तो,
क्या आएगा बच्चे, MU सी टी की अगर मैं बात करूं, ये आ जाएगा 1/CT, राइट। अब बात करूंगा MU CT+1 की, तो ये आएगा 1/1 + थीटा अपॉन 1/CT+1, सो दिस इज 1/1 + थीटा, 1/CT+1, right? And in this case, if I rewrite this equation, it will be 1 + theta into CT+1 divided by CT, and we need to get this equals to 1 + R. Therefore, CT+1 by CT, which is nothing but the ratio, is equals to 1 + R by 1 + theta, which is equals to 1.08, because R is equals to 0.8 if I'm not wrong, and theta is equals to 1.05. So this is 1.05. Now I'm using my calculator to find out the ratio. Just give me a second here. It will be 1.08 divided by 1.05. So the answer here is 1.20, right? And this is your correct answer, right?